elasticity of demand. Price or price elasticity of demand. What is price elasticity of demand? Generally हम law of demand जब पढ़ते हैं, when we study the law of demand, we study in the law of demand that there is opposite relationship between price and quantity demand. Other things remaining same. When price falls, quantity demand increases. When price increases, that quantity demand falls. But law of demand does not tell us or it does not clarify us how much price has changed and how much demand has changed. How much or to what extent there is response of demand due to change in price. So it is price elasticity of demand, which shows by how much or to what extent, what is the response of quantity demand of a good and its price changes. Generally, we see some goods shows more response and some shows less response when its price changes. That means for some goods, if there is a slight change, small change in price, their demand changes at a large extent, in a good number, in a good quantity. But there are some goods whose response is very less or low. When their price changes by a huge amount, by a high amount, even then their demand changes by less amount. Or we can say if price changes by 10%, demand changes by less than 10% for some goods. For some goods, there is same response as price. If price changes by 10%, demand also changes by 10%. So these things we will discuss here in price elasticity of demand. What is price elasticity of demand? You would write down. Answer. The law of demand says only when price of a good falls, its quantity demand rises, and when price rises, the demand falls. Or the law of demand only says negative or opposite relationship between price and quantity demand of a good. Other thing is remaining same. ये law of demand कहता है. But it does not tell us by how much or to what extent the demand changes due to change in its price. But it does not tell us by how much or to what extent demand of a good changes due to change in its price. So ये हमें ये नहीं बताता है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गई और कितना अमाउंट प्राइस चेंज हो गया. ये इतना ही बताता है price falls, demand increases. Price increases, demand falls. Demand में कितनी change आ गई in terms of units or in terms of percentage. Price में कितनी change आ गई. पहले price में change आती है, फिर demand में change आती है. ये law of demand ये there it is silent. The extent to which, regarding the extent
to which recording the response of demand and response of price. Response of demand due to change in price. It is silent. It does not clarify us. So it does not tell us by how much or to what extent demand of a good changes due to change in its price. It is price elasticity of demand, which shows responsiveness of quantity demand of a good due to change in its price. So it is price elasticity of demand. Price elasticity of demand hमें दिखाती है. It is price elasticity of demand, which shows responsiveness of quantity demand of a good. सर यहाँ पे क्या है extended demand of a good Or to what extent demand of a good changes due to change in its price. So it is price elasticity of demand. Price elasticity of demand हमें सिखाती है, which shows क्या दिखाती है, responsiveness. कितना response demand ने मतलब कितनी reaction demand ने, कितनी change demand ने दिखाई. The responsiveness of quantity demand of a good due to change in its price. Due to change in its price. It is price elasticity of demand, which shows responsiveness of quantity demand of a good due to change in its price. Other things remaining same. Price के बगैर जो चीजें हैं वो same. Other things remaining same. Because we are studying only price elasticity of demand, not elasticity of demand. Because other things have other elasticities. When we make relationship between income and quantity demand, so उस वक्त हमें पढ़ना है income elasticity of demand. अगर आप price of related goods के साथ relation बनाएंगे, other things same रखेंगे, तो उस वक्त हम कहेंगे that is cross elasticity of demand. So here we are concerned about price elasticity of demand. So it is price elasticity of demand, which shows responsiveness of quantity demand of a good due to change in its price. Other things remaining same. Thus, in other words, price elasticity of demand shows degree of responsiveness, of degree of change. Thus, this is perfect meaning of price elasticity of demand. Thus, price elasticity of demand shows degree of responsiveness of quantity demand of a good due to change in its price. Other things remaining same. Remain as same. Other things remain as same. Yes. Thus, it shows degree of responsiveness. Simple. अगर ये सवाल पूछा जाएगा, what is price elasticity of demand? So we can give so many definitions. One of the definition is price elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demand of a good due to change in its price. Due to change in its price. So ये price elasticity of demand हमें दिखाती है कि कितना response, कितनी change आ गई किसी चीज की demand में अगर उसका price change हो गया by this amount, by this percentage. Law of demand हमें ये चीजें नहीं दिखाती है. Law of demand दिखाती है price falls, demand increases. Price increases, demand falls. demand falls. Yes, ये इतना ही बताता है. ये नहीं बताता है कि प्राइस में कितनी चेंज आ गई, कितने अमाउंट की चेंज आ गई या कितने परसेंटेज की चेंज आ गई, और उससे डिमांड में कितनी चेंज
आ गई. So it is price elasticity of demand. So this is one of the definition. Next definition is it is proportionate change in quantity demand of a good due to proportionate change in its price. Next definition. What is price elasticity of? एक definition ये हो गई. It is degree of responsiveness of quantity demand of a good due to change in its price. The next definition is it is proportionate change. It is proportionate change. Proportionate change in quantity demand of a good due to proportionate change in its price. और ये भी हो सकता है it is percentage change in quantity demand of a good due to percentage change in price. Percentage change in price. So you have now three definitions for price elasticity of demand. Degree of responsiveness of quantity demand of a good due to change in its price. It is proportionate change in quantity demand due to proportionate change in price, or it is percentage change in quantity demand of a good due to percentage change in its price. Other things remaining same. That is, now we can use the mathematical symbols. How to draw this formula for how to calculate the price elasticity of demand. अगर हमारे पास इतनी परसेंट डिमांड में चेंज आ गई, ये आ गई ड्यू टू इतनी परसेंट प्राइस में आई थी. पहले प्राइस में चेंज आती है फिर डिमांड में आती है. फॉर एग्जांपल प्राइस में इतनी परसेंट चेंज आ गई फिर उससे इतनी परसेंट चेंज डिमांड में आ गई. तो हाउ टू कैलकुलेट दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सो यू कैन से द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसी डेफिनेशन से इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. यही लिखेंगे percentage change in quantity demand divided by percentage change in price. Percentage change in price. और ये मैंने ये वाला पार्ट उठाया, ये वाला, ये भी मैं लिख सकता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to proportionate change. Proportionate change in quantity demand divided by proportionate change in price. Proportionate change in quantity demand divided by proportionate change in price. Yes. Or we can write down it like this: elasticity of demand is equal to delta Q by Q. ये होता है proportionate change in quantity divided by delta P by P. This is proportionate change in quantity demand. This is proportionate change in price. ये दिखाता है proportionate change in quantity demand as a result of proportionate change in price. कितनी परसेंट या कितना अमाउंट या कितना एक्सटेंट, how much price has changed due to change in price, how much quantity demand has changed. अगर मैं ये into 100 and into 100 डालूंगा, ये बन गया परसेंटेज चेंज. इस तरह like this. ये हो गया प्रोपोर्शनेट चेंज. ये ऐसे बन सकता है परसेंटेज चेंज. डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 डिवाइड बाई डेल्टा पी बाई पी इंटू 100. ये बन गया
ये बन गया परसेंटेज चेंज सारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब थोड़ा ऑपरेशन इसमें करना है, ये अंडरस्टैंड हो गया इतना? दिस इज proportionate change in quantity सर demand कैसे divided समझाइए? सर इस समझे बे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इट इज proportionate change in quantity demand due to quantity demand of a good due to proportionate change in price। अगर हम proportionate सिंबल्स में लिखेंगे, proportionate होता है change in quantity demand divided by quantity, delta Q by Q upon proportionate change in price, delta P by P, delta P by P। So this is proportionate change in quantity demand and this is proportionate change in price, delta Q by Q। क्वांटिटी में कितनी चेंज आ गई, डिवाइड बाय क्वांटिटी, ऑलरेडी क्वांटिटी कितनी थी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा, वी हैव क्वांटिटी डिमांड, वी हैव प्राइस, वी हैव क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड शेड्यूल आपको पता है ना? डिमांड शेड्यूल आपको पता है ना? डिमांड शेड्यूल किस तरह बनाते हैं? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, डिमांड शेड्यूल ये होता है प्राइस और ये होता है क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांड 1 है, अगर प्राइस 9 है, क्वांटिटी डिमांड 2 है, ये हो गया ना डिमांड शेड्यूल। ये दिखाता है हमें, ये है ना लॉ ऑफ डिमांड, इफ प्राइस इज 10 डिमांड इज 1, अगर प्राइस फॉल हो गया, इफ प्राइस फॉल्स टू 9 डिमांड इंक्रीजेस टू 2, ये है ना। अब मैंने क्या लिखा, डेल्टा क्यू, इसमें कितना चेंज आ गया, इसमें कितनी चेंज आ गई, डिवाइड बाय क्यू, क्यू होता है पहली क्वांटिटी, हाँ 1 to 2, इसमें कितनी चेंज, यह दिखाता है चेंज, और क्यू है ओरिजिनल क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी क्या है। इसी तरह प्राइस में कितनी चेंज आ गई, फ्रॉम 10 to 9, फिर प्राइस, पहला प्राइस क्या है, so this is proportionate change in quantity demand divided by proportionate change in price। now और डेरिवेशन दे देंगे इसको, यस और डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये लिख लिया, velocity of demand is equal to delta Q by Q upon delta P by P, or delta Q by Q into 100 divided by delta P by P into 100। Therefore, velocity of demand, ED, velocity of demand is equal to delta Q by Q upon delta P by P। ये में फिर मैंने ऐसे ही लिख लिया, और भी ऑपरेशन में करूंगा, ED is equal to delta Q by Q into P by delta P। जो दो अपॉन है ना, इनको मैंने खत्म कर दिया, नजर आता नहीं आता सर ऐसे तो नहीं दिख रहा। ओ हो गया ना, मैंने लिख Yes, लिया sir. ED is equal to delta Q by Q upon delta P by P, जो मैंने ऑलरेडी लिखा था। अब मैंने थोड़ा इसको ऑपरेशन किया, डेल्टा Q by Q ऐसे ही लिख लिया, ये एक अपॉन खत्म करने के लिए मैंने इसको रेसिप्रोकल दे दिया, इनटू, ये मैंने इनटू में चेंज कर दिया P by डेल्टा B। ये थो में Yes, sir. ये हिस्सों में सेम, ये हिस्सा मैंने सेम रख दिया, इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में तो रेसिप्रोकल आता है यहाँ P by डेल्टा P। देयरफॉर ED is equal to, और मैं थोड़ा ऑपरेशन करूंगा, डेल्टा Q बाय, ये डेल्टा P में यहाँ ले आऊंगा, डेल्टा P ये ऑन भैया था अपॉन P by Q ऑन भैया था, ये बने फार्मूला। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कंटिन्यूअसली आपको जरूरत आएगी ये फार्मूला, व्हाट इज
The formula for calculating elasticity of demand is delta Q by delta P into P upon Q. Delta क्या होता है? Change. Delta है where Change. Q is quantity demand. जो हमने सैम्पल्स यहाँ इस्तेमाल किए Q है, P हमने किया P is price, delta means change. Change कितना आ गया? क्वांटिटी में कितनी चेंज आ गई, प्राइस में कितनी चेंज आ गई, डिवाइड इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी, प्राइस बाय क्वांटिटी। यस, कुछ चीजें एक दो लाइन और लिख लीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। यह है फाइनल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज आपको याद रखना है, तुम्हारा वैल्यू जो आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is always negative, is always negative. Why? ये नेगेटिव में आएगा, बिकॉज अगर कोई पूछेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आता है, माइनस आता है, क्यों आता है? बिकॉज देयर इज नेगेटिव और अपोजिट relationship between price and quantity demand. यहाँ ऑलरेडी रिलेशन ही नेगेटिव है, इसलिए वैल्यू भी नेगेटिव आता है। तो हम क्या करते हैं, वी इग्नोर, हम ये वैल्यू इग्नोर करते हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर हम मीन डिविएशन पढ़ते हैं, उसमें हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं जब मॉड में आता है वैल्यू, तो उस वक्त हम इग्नोर करते हैं। हियर आल्सो वी इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू, माइनस साइन, जो माइनस साइन हमें आता है हम इग्नोर करते हैं। वी इग्नोर माइनस साइन एंड टेक ऑल वैल्यूज एज पॉजिटिव, एंड टेक ऑल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी एज पॉजिटिव, एज पॉजिटिव। हम वैल्यूज पॉजिटिव निकालते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। यदि कुछ मिनट है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आपको समझ आएगा। ये उठाया, हैव यू कंप्लीटेड इट? यस सर। ये कंप्लीट हो गया? यस सर। लिखिए, एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट price elasticity of demand from the following table, from the following demand schedule, from the following table लिख लीजिए या demand schedule लिख लीजिए, जो आप है। अगर हमारे पास प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड है, फॉर एग्जांपल प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांड है 20। प्राइस फॉर एग्जांपल कम हो गया फ्रॉम 10 to 5, डिमांड इंक्रीज हो गई फ्रॉम 20 to 30। हाँ, यहाँ हम आप मुझे दे दीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए फार्मूला है हमें, जो अभी हमने किया है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू। ये है ना फार्मूला, डेल्टा क्यू बाय change in quantity demand divided by change in price into
प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको सिखाऊंगा, नजर रखना। क्वांटिटी में कितनी चेंज आ गई, कितनी चेंज आ गई फ्रॉम 20 to 30, हाउ मच चेंज? 20 और 30 में कितनी है? 10 की गैप है, शाबाश। प्राइस में कितनी गैप है? फ्रॉम 10 to 5, शाबाश। 20 से 30 तक, इफ वी 20 minus 30, ये कितना हो गया? -10 शायद -10, हाँ -10, यस माइनस। अच्छा, फ्रॉम 10 to 5 कितनी चेंज हो गई? ये -10 है, ये 5 की चेंज, 5 की चेंज है ना। इसी तरह फर्स्ट प्राइस, पहला प्राइस, प्राइस क्या है? 10 है। फर्स्ट क्वांटिटी जहां से चेंज हो गई, ये क्वांटिटी, ये 20। अब निकालिए वेलोसिटी ऑफ डिमांड। सर ये -10 है, कौन -10 है? ये सर ठीक है टी तो यहाँ 10 ही है ना सर, नहीं आपने लिखा है वो। हाँ, चेंज आ गई हमें Yes, sir. पहले -10 की, 20 - 30 हो गया -10। अच्छा, अब बताइए 10 into 10 कितना हो गया? -100 डिवाइड बाय 20 into 5, 20 into 5, 10 into 10 -100, 20 into 5, 100, 100 cancel, 250 100 minus 100 -1 is velocity of demand. क्लियर? ठीक है ना? यस सर -1 है velocity of, यस सर we ignore the minus sign, हम ये इसको करते हैं +1. So all signs are taken as positive. In velocity of demand, all signs are taken as positive. Yes. Positive. तो अब मुझे और एक खुद वो करना, आप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मैं आपको सवाल दे दूंगा, आप घर में करोगे, हैं? ठीक है? यस सर प्राइस 20 है, ये 50 यस है। सर प्राइस 20 है, क्वांटिटी डिमांड 50 है। फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम 20 to 30, ये हो गया फ्रॉम 50 to, सॉरी, जब प्राइस ज्यादा हो गया डिमांड कम हो जाएगी, ये आएगी फॉर एग्जांपल 40 पर, है? इसका आप ये निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग खत्म, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई क्वेश्चन? नो सर थैंक यू वे, थैंक यू। इसी तरह क्लास लेना है। ओके सर ओके।